साउंड का प्रॉब्लम होता है क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऊपरटा ଟିକେ ରହିବା ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ସବୁ ସେଟ୍ ସାର୍ଟ ବୁଝିବା। Good morning to all. Good morning, Mamun. Let's start. Due to technical problems, is going to be late, but you all be online. जितने जल्दी सब online ही जाओ. सर सर्वर रूम में बसता हूँ मो सर्वर रूम में जाऊँ हाँ आगे सर इंग्लिश डिपार्टमेंट हम Okay, last class हमें कौन पढ़ी थी ले reproductive system रो that male reproductive system हमें finish करी थी ले now आज हमें पढ़ीबा female reproductive system of animal with plant reproduction. Okay, तो all are audible. समस्त को sound सुबुची तो comments रे लिखो. If you are facing any problem, it will be solved. Okay, now start. All are audible. समस्त को sound सुबुची तो ताले आज हमें देखिबा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आगे मु तुम मानको बुझाई दउची जेमति लास्ट क्लास बुझाई देली सेमति बुझाई देबी तापरे हमें से नोट को जीवा. ओके
listen, एटा हला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो दैट इज कॉल्ड fallopian tube. ए fallopian tube केमिति ओव्यूम प्रोड्यूस माने प्रवेश करिवो ड्यू टू द हेल्प ऑफ व्हाट दैट ब्रश लाइक सब्सटेंस. ए देखो एटा सब ब्रश भलिया एंड दैट इज कॉल्ड फिमराई. कोन को कहंती फिमराई. एटा को लिखा है फिमराई. तो ए फिमराई द्वारा से ओव्यूम टा जाई कि कोडी पहुंचीबो ना एठी. दैट इज कॉल्ड fallopian tube. ओके. तापर एठी रिप्रोडक्शन रे स्पर्म रिलीज हेतिबो और से स्पर्म टा जाई कि एठी ताको मीट करिवो. बुझिला फर्टिलाइजेशन करिवो. तो बर्तन फर्टिलाइजेशन टा कोडी होची देखो. बर्तन फर्टिलाइजेशन टा होची तमरो fallopian tube रे. हैला फर्टिलाइजेशन टा कोडी होची fallopian tube. This is a previous SSC question. Fertilization takes place in what? Fallopian tube. बुझिला. तापरे दैट फर्टिलाइज एग इंटर इनटू द यूटेरस. एठी यूटेरस को आसीबो आ एठी डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस. बेबी रो डेवलपमेंट एठी हबो. हैला तापरे हमरो यूटेरस रो जो वॉल टा कोंती एंडोमेट्रियम. दैट एंडोमेट्रियम कन्वर्टेड इनटू प्लासेंटा एंड दैट प्लासेंटा फॉर्म ए ट्यूब दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल ट्यूब. और से ट्यूब टा बेबी संगे अटैच होता है. तो मदर रो न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन सब बेबी की से अम्बिलिकल ट्यूब द्वारा सप्लाई हुए. बुझेला ना नहीं. एंड आफ्टर द 9 मंथ द बेबी development of the baby completed and it released from the what same vaginal passage. Okay. और that period is called gestation period. कौन था कहंती gestation period. Gestation period कौन ना this is the time gap of the fertilization and the development of the baby. बुझिला. fertilization जतेले हबो ताठू नै करी तो बेबी रो डिलीवरी हबो से मोमेंट से टाइम पीरियड टाको कहंती gestation period. ओके. बुझी पारला समझते. तापरे जीवा मने रख ए जो बेबी रो डिलीवरी होची फास्ट हेड बाहरुची तापरे तारो लेग बाहरुची. किंतु some few cases what happen na first leg comes and then head comes and that type of baby is called breech baby. हैला सब एने से नोट रे लिखा है मु आउथरे पढी तमन रिवीजन करै देबी आगे बुझै दउची. and that type of baby is called breech baby. क्लियर हैला समझते. तो एबे देखो एटा हला आफ्टर द रिप्रोडक्शन. तो देखो एठी भी गोटे ओभारी अछि एठी भी गोटे ओभारी अछि. हैला तो वर्तमान एठी ओव्यूम ता जाई करी एठी फर्टिलाइजेशन करे. तो माइंड इट माने गोटे साइड रे फर्टिलाइजेशन जनरली गोटे साइड रे हुए. आ एठी जतले फर्टिलाइजेशन हेई गला तापरे ताकर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड मु कहि मेंस्ट्रुअल साइकिल कोन कहबी. मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप further ovum formation stop, everything will be stop. Okay. किंतु बेले बेले कौन हुए ना एठू भी ओव्यूम जाई कि ए जगह रे भी फर्टिलाइजेशन हे गेला. तो देखिलो दीटा जगह रे फर्टिलाइजेशन हैला ना. ता माने दीटा जाइगोट तयारी हैला. तो तले दीटा जाइगोट तयारी हबो से तले दीटा बेबी फॉर्मेशन हबो एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट ट्विन. दैट इज कॉल्ड ट्विन. बुझिला. एंड दिस टाइप ऑफ this type of twin is called fraternal twin. Fraternal. That type of twin is called fraternal twin. Fraternal twin कौन when twins produced from development होची then fundus determine the child growth condition. मु कहितली से जो हमर देखैतली ना से फंडस रो एबनॉर्मल साइज हेले चाइल्ड रो कंडीशन भी एबनॉर्मल हे हुए. हैला से ताकू देखि कि जणा पड़े. तापर देखो due to decrease or increase the size of fundus leads to abnormality of the child. Okay. तापर देखो लिखा है breech child. breech child कौन it occurs when baby born at bottom most माने हला आगे leg बाहरिबो तापर head बाहरिबो. Okay. that type of child is called what breech child or breech baby. now menstrual cycle or estrous cycle हला the cyclic change occurring in the reproductive tract of the female. It continues from the age of 12 to 50 years. Okay. तापरे it repeated every 28 days and it lasts up to 3 to 5 days. और menstrual cycle टा 3 दिन रु 5 दिन जाए चालू थाए. Okay. तापरे आसो it is controlled by FSH
follicle stimulating hormone, luteinizing hormone and estrogen, এটা n হবো, estrogen and progesterone. ओके, एते सारा हार्मोन ताकू कंट्रोल करंदी काकू मेंस्ट्रुअल साइकिल को. तापर आसो एंडोमेट्रियम प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ यूटरस ब्रेक्स if the fertilization is not occur and it comes out from the vagina in the form of blood along with unfertilized ovum called menstrual cycle, that already I discussed. Okay, देखो मु तुम मानकु जोटा कहिथिली आउ थरे देखो प्राइमरी oocyte, then primary oocyte mature हैला. ओके, तापरे it undergo first meiotic division, that is meiosis 1. secondary oocyte हैला, then this is the first polar body. तापरे एटा again हमरो कोन हबो meiosis 2 रे जीवो and it form a mature ovum, that is N, and second polar body. Out that this polar body again divide to form another two polar body, that is called polar bodies हैला. आ ovum केटा ovum गोटिए one ovum and three polar bodies, that polar body disintegrate after the fertilization. Okay, so I think you clear. Now come to next. एबे ह्यूमन स्पर्म विषय देखो, it is a small cell divide into head and tail. Okay, sperm देखो ह्यूमन स्पर्म विषय एबे म तुम मानकु बुझे दउची, तापरे बतेबी केमती क्वेश्चन एथिरु आसी पारे. ओके, it is a small cell divide to into head and neck and tail. तो देखो एबे this is called head, this part देखो this part is called eta hochi human sperm. This part is head and now this is called neck or middle piece. ए देखो एटा हला तमरो middle piece. Okay, or head, sorry neck, and this part is called tail, and that tail contains flagellum. बतैथली flagella and cilia help in locomotion. तो एठी flagella अछि बोली कि sperm ता कोन होची ना मूवेबल होची. बुझियला. तापर आसो head contains nucleus and acrosomal vesicle. एठी एटा हला acrosomal vesicle, एटा acrosome. एटा हेल्प करे कोन ना ओव्यूम को पेनिट्रेट करियार एटा हेल्प करे. ओके, तापर it contains माने acrosome contains hydrolytic enzyme needed to digest the extracellular coat surrounding the egg. ओव्यूम रो जो extracellular coat थाए ताको डाइजेशन माने पेनिट्रेट करियार हेल्प करे. बुझियला. ना tail contains motile flagellum. ए tail ता देखो motile flagellum contains करूची. It gets energy from ATP that generated by mitochondria हैला. बुझियला. ए देखो हमर मिडिल पीस और नेक रीजन रे जो माइटोकॉन्ड्रिया थाए सेठी एटीपी प्रोड्यूस हुए और दैट एटीपी ब्रेक्स टू गिव एनर्जी and for this energy that flagella move and entire sperm able to move. Okay, तापर neck contains two centriole. ए देखो neck region रे दीटा centriole अछि. बुझियला. ए क्वेश्चन केमती अराइज हबो nucleus found in sperm in head region, neck region, tail region, none of these. कौन होगा आंसर? That is head region. Centriole found in middle piece or neck region. Then flagellum found in tail region. हैला. Then what is the function of acrosome? Acrosome help in penetrating the what extracellular wall of the ovum. Clear हैला. Okay. तापर जी आगु को सेमती आसो बे पढ़िबा हमें ओव्यूम, ह्यूमन ओव्यूम. इट इज राउंडेड एंड विदाउट योक. ओके, योक एथरे न थाए. देखिथिबो एग रो दीटा पार्ट, गोटे एग व्हाइट आ गोटेला एग योक. तो वर्तमान एटार कोन हमर ह्यूमन ओव्यूम रे कोनोसी योक न थाए. सेति पय दैट टाइप ऑफ ओव्यूम इज कॉल्ड ए लेसिथल. एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ह्यूमन ओव्यूम इज व्हाट ए लेसिथल. ओके, तो बेसी आज चैप्टर टा बहुत इंपोर्टेंट.
सेति में बेसर बेसी ऑनलाइन हे जाओ बुझिला आ डोंट गो इन द मिडिल ऑफ द ऑनलाइन मझिर उठी कि जीवनी हैला से नाले किछि बुझी परिबनी ओवियम इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन along with more two covering called what zona pellucida and corona radiata ए देखो एटा हला तमरो कोरोना रेडिएटा लिखाई जेठी तापरे ता भीतर टाको कहंती कोन जोना पेलुसिडा ओके एलेसिथल लेग कोन ना एग हैविंग नो yolk that is in mammal तापरे एटा भी तमरो हमर प्रीवियस क्वेश्चन कहितली तम कहिबे ना तुमको को क्वेश्चन आसीथिला देखो तापरे हला माइक्रोलेसिथल एग हैविंग लिटिल yolk सी अर्चिन एग्जांपल हला सी अर्चिन मेराइन एनिमल तापरे सुशांत गुड मॉर्निंग देखो आज तमे लेट हो गेलो बहुत किछि कहि सरलेनी देन मेजोलेसिथल एक कोन मॉडरेट अमाउंट ऑफ yolk ओके देन मैक्रोलेसिथल जेमति की फ्रॉग मैक्रोलेसिथल कोन लार्ज yolk जेमति की बर्ड्स रेप्टाइल एंड फिशेस ओके एमान करो बहुत सारा yolk थाए बुझेला तो क्वेश्चन आसीबो ह्यूमन ओव्यूम इज एलेसिथल माइक्रोलेसिथल मेजोलेसिथल मैक्रोलेसिथल कोन हो आंसर दैट इज एलेसिथल देयर इज नो yolk ओके चलो जीवा आगु को बे नाउ कम टू फर्टिलाइजेशन fertilization कोन it is a process by which sperm and ovum fuse to form what zygote and mind it zygote is always unicellular हैला तापर आस fertilization takes place in the ampulla region of oviduct जहा fallopian tube सेया एठी जो ए fallopian tube रो गोटे रीजन अछि दैट इज कॉल्ड एम्पुलरी रीजन से एम्पुलरी रीजन रे तारो फर्टिलाइजेशन हबो किंतु तमर एते डीप क्वेश्चन आसीबनी तमर एतिकी आसीबो फर्टिलाइजेशन कोठी हुए दैट इज ओविडक्ट और fallopian tube ओके तापर आसो नेक्स्ट एक्रोसोम रिलीज एंजाइम एंड एबल टू पेनेट्रेट द जोना पेलुसिडा ऑफ द ओव्यूम ओके एटा ऑलरेडी मु कहि सरलेनी तुमको नाउ कम टू क्लीवेज माने कोन देखो आगे गोटे जनरल आईडिया दे देउची एटा हला तमरो जाइगोट इज ऑलवेज यूनिसेलुलर एंड इट इज डिप्लॉयड टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एथिरे थाए तो एठी कोन हुए ना एमटी एई सही जाइगोटटा माइटोटिकली डिवीजन हुए हला एमटी फास्ट डिवाइड है कि दीटा सेल पूरी डिवाइड हो चारिटा सेल हला आठटा सेल एमटी एकरी डिवीजन हो किंतु क्लीवेज आ माइटोसिस रे डिफरेंस अछि देखो डिफरेंस कोन माइटोसिस रे कोन हुए ना तमरो एई गोटे सेलटा डिवाइड है कि एंटायर दीटा सेल रे कन्वर्ट हुए किंतु एठी जाइगोट रे कोन हबो तार भीतर सेल गुडा को सब डिवाइड होची एंड दैट ऑल सेल्स आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन और सिंगल कवरिंग सेति पई द डॉटर सेल्स आर वेरी स्मॉलर ओके बहुत स्मॉल था एज कंपेयर्ड टू माइटोटिक डिवीजन सेल रो माइटोटिक डिवीजन रे जो डॉटर सेल हुए से सेल टू बहुत छोटे गुडा था एंड ऑल सेल्स सराउंडेड विथ ए सिंगल मेम्ब्रेन तो एठी देखिलो सब सेल गोटे सिंगल मेम्ब्रेन रे सराउंडिंग हेछि कि हेइनी अलगा अलगा अछि तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मतलब सिंगल माइटोसिस एंड द माइटोसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द जाइगोट ओके नाउ क्लीवेज कोन देखो एटा एते डिटेल्स तमनकर को गाइड रे भी लिखा हेनी तो एबे हेई पारे क्वेश्चन आसी जीवो सेति में तुमको टिके डिटेल्स पढौची ओके इट रिफर्स टू सेल डिवीजन दैट ऑकर इन फर्टिलाइजेशन एग began to develop into an embryo माने कोन जो चाइल्ड जोटा कि फिटस बोली ताको कहंदी कोडी ना मम्मी करो यूटेरस रे थाए नाउ अबाउट 30 hours after fertilization zygote form two cell that is called blastomere okay fast cleavage that is called fast cleavage माने एमती गोटे जाइगोटा डिवाइडिंग इन दीटा सेल हुए that is called what blastomere and fast cleavage okay देखिलो केटा सेल अछि two cells अछि ना नै that is two cell condition तापर आसो the next division occur within the 40 hours आउ 40 घंटा भीतर सेकंड क्लीवेज हो माने डिवाइड टू फॉर्म फोर सेल तापर एटा एट द एंड एटा डबल टी होबनी गुटी टी
गोटे टी ही हम एट द एंड ऑफ थर्ड डे थर्ड क्लीवेज अकर पुणी थर्ड क्लीवेज हेले केतेटा हेगला 8 सेल हेगला एट द एंड ऑफ फोर्थ डे at the end of what fourth day fourth cleavage occur to form compact 16 cell stage चारिटा आलू केतेटा हो जाइथबो सेल for 16 cell and that is called also blastomere okay looks like a fruit of mulberry fruit बरिया देखिया को लागे सेट में याकू मलबरी स्टेज बोली भी कहंती और मेरुला बोली कहंती ओके ए टर्म दा सब मने रखो दैट इज कॉल्ड मलबरी स्टेज और मेरुला now it moves towards the uterus एबे से जाइगोटा कोडी के मूव होबो ना यूटेरस आडी को मूव होबो सेटा ऑलरेडी मु कहि देछि तार हम डिटेल्स फॉर्म दा पढुचे तापर आसो when the morula enter into the uterine cavity a glycogen rich secretion from the gland of endometrium enter into the medulla through what endometrium enter into the medulla through the zona এটা দেখা যাউনি টিকে রহ ए देखो देखि दउछ तुमको through zona ए देखो डिले through zona pellucida that provide nourishment for the developing medulla आउथर देखो when medulla enter into the uterine cavity medulla ता uterine cavity भीतर को आसी गला a glycogen rich secretion from the gland of endometrium कोन ना हमरो wall of the uterus को endometrium कहंती तो से endometrium रे गोटे glycogen release secretion हुए and that enter into the medulla सेटा medulla भीतर को पसिला through the vena pellucida बे हम पढिले हमरो ओभारी रो गोटे wall को vena pellucida कहंती आउ सेही ग्लाइकोजन रिच सब्सटेंस कोन करे ना नरिशमेंट दिए कहा को ना डेवलपिंग मरुला को क्लियर हैला एबे जीवा आगु को जीवा तापर एठी गोटे आउट लेखा is देखो एटा पढी दउची ब्लास्टोमियर रिकॉग्नाइज देमसेल्फ around the large fluid cavity that is called blastocele हैला तो बर्तन से जो मेरुला स्टेज तार गोटे कैविटी तयारी हुए गोटे होल तयारी होय तारि भितरे that is called blastocele तापर आगु को जीवा देखो now the entire arrangement is called blastocyst है मोरुला with a cavity एमदी देखो मु देखै दोछि तुमको मोरुला कंडीशन एटी सब एमदी सेल उडा को डिवाइड हे की अछि and it form a cavity is empty that is called blastocele और इंटर प्रोसेस टा को कहंती कोन ब्लास्टोसिस्ट हैला बुझी पारिलो तापर आसो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू डिस्टिंक्ट सेल पॉपुलेशन अराइज हैला ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू डिस्टिंक्ट सेल पॉपुलेशन माने यारी भितरे दीटा डिस्टिंक्ट सेल तयारी हुए एंड दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट सेही दीटा सेल रो ना कोन ना एम्ब्रियोब्लास्ट आ गोटे हला ट्रोफोब्लास्ट कोठी हमरो ब्लास्टोसिस्ट भितरे हला तापर हासो माने एठी ए गोटा करो एमती जतले एटा डिवाइड हे कि गोटे कैविटी तयारी कला आ ए इंटर सिस्टम को कहंती कोन ब्लास्टोसिस्ट ए ब्लास्टोसिस्ट फर्दर डेवलपमेंट हे कि दी प्रकार सेल तयारी करिवो बुझियला सेल पॉपुलेशन ता माने एमती देखो एई भलिया एठी किछि ग्रुप हम आउट कलर रे कहूची एठी किछि ग्रुप ऑफ द एमती सेल थिबो आ एठी आउ गोटे ग्रुप ऑफ द एमती सेल थिबो हैला तो फर्स्ट गोटा को कहंती एम्ब्रियोब्लास्ट आ गोटा को कहंती ट्रोफोब्लास्ट हैला तो एबे देखो ब्लास्टोसिस्ट हैज टू लेयर
गोटे है एम्ब्रियोब्लास्ट एटी लिखी पुणी आउ थे से कही दूसरी ब्लास्टोसिस्ट है टू लेयर गोटे है कौन एम्ब्रियोब्लास्ट और इनर सेल मास टू फॉर्म बेबी ओके आउ ए गोटा डिवाइड है कि बेबी तैयारी करिवो किंतु सेकंड लेयर जोटा दैट इज कॉल्ड व्हाट ट्रोफोब्लास्ट इट फॉर्म प्लासेंटा एंड व्हाट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हैला दैट attachment of the blastocyst on the endometrium of uterus called implantation कौन ना attachment of the blastocyst on the endometrium of the uterus एबे सही blastocyst कौन endometrium wall रे attach ही जीवो and that attachment is called implantation okay एबे आसो it occurs 7th day after the fertilization एटा केबे एटा कोन ना एटा केते एटा ए जो हमरो केबे हुए ना 7 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन रो 7 days परे एटा हुए कोन ना ब्लास्टोसिस्ट डिवाइडेड इनटू टू लेयर फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्ट दैट डेवलप टू फॉर्म बेबी एंड सेकंड लेयर इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट दैट फॉर्म व्हाट प्लासेंटा एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखो एटा को हमरो डेवलप होला बेबी रे ना तो एटा को कहते तार मेम्ब्रेन तो ए मेम्ब्रेन छोड़ा अदर मेम्ब्रेन भी डेवलप हुए दैट इज डन बाय व्हाट ट्रोफोब्लास्ट क्लियर हैला ओके नाउ आफ्टर दैट ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली सिंक इनटू द यूटेरस रो वॉल भीतर पूरा ब्लास्टोसिस्ट पसी जाए ए स्टेज फॉलोइंग दी थर फॉलोइंग लिखा गेला ए स्टेज फॉलोइंग ब्लास्टुला where it is hollow cup shaped structure having 3 layer and that is called gastrula okay एबे देखो वर्तमान हमरो एम्ब्रियोप्लास्ट जोटी अछि से एम्ब्रियोप्लास्ट रे एमती सब लेयर तयारी हुए है होलो कप भलिया शेप रे एंड तीनटा लेयर सेठी रे तयारी हुए एंड दैट लेयर स्ट्रक्चर सेल इज कॉल्ड माने लेयर्ड स्ट्रक्चर सेल इज कॉल्ड gastrula मुंडे बसिला नाउ that 3 layer form ectoderm mesoderm and endoderm तीनटा लेयर तैयारी हुए and that layer form what different part of that layer form different part of the body ए ectoderm mesoderm और endoderm रो बहुत सारा कोन हमरो बॉडी पार्ट तैयारी हुए कहार ना बेबी रो ओके आई थिंक समस्त 100% बुझी पारथिबो एबे आगु बुझीबा आज टिके क्लास टार बहुत एलाबोरेटली कहूची इटा दरकार सेति भाई खयाक पडुची जदी किछि बाउंस होउची यू राइट इन कमेंट बॉक्स मु आउ थरे ताको पढेबी ओके डोंट बी कंफ्यूज हैला तो ए एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म रो डिफरेंट हमरो कोन बाहरे ना बॉडी पार्ट्स बाहरे तो एटा तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल पढ़िले एबे आसो आमे पढ़िबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट देखो प्लांट रे एकदम गोटे जनरल आईडिया दे दोची एटा होले एंजियोस्पर्मिक प्लांट हला होची फ्लावरिंग प्लांट जोतरे फूल फुटे जो प्लांट रे फूल फुटे ताकू हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोली कहंती तो ए फ्लावर इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट रो सेक्स ऑर्गन के ना प्लांट बिकॉज़ इट कंटेन्स द सेक्स ऑर्गन जेमती हमरो ह्यूमन बॉडी रो पेनिस वेजिना दि जाति सेक्स ऑर्गन सेमती हमरो प्लांट रो भी सेक्स ऑर्गन अछि तो प्लांट रो सेक्स ऑर्गन दि प्रकार गोटे हला मेल सेक्स ऑर्गन आ गोटे हला फीमेल सेक्स ऑर्गन हला आगे गोटे जनरल आईडिया बतै दोची तो मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड स्टामेन कोना को कहंती स्टामेन बोली कहंती हला ए देखो एटा दिस इज कॉल्ड स्टामेन एटा देखलो केटा स्टामेन अछि 1 2 3 4 टा स्टामेन अछि so group of stamen is called androecium तो तुम्हारे एग्जाम रे एमती भी पढ़ी पारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट
आइदर स्टामेन देथिबो नहले एंड्रोस्टियम देथिबो तो आंसर हला स्टामेन और एंड्रोस्टियम हला सेमती फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहती कार्पेल कार्पेल और पिस्टिल कार्पेल और पिस्टिल एंड ग्रुप ऑफ कार्पेल एंड पिस्टिल को कहती गाइनोसियम हला गाइनोसियम तो सेमती एग्जाम रे पढिबो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड व्हाट ना आइदर पिस्टिल और कार्पेल नहले गाइनोसियम बुझला एबे आसो एटा मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव कहि देली एंड दिस ए फ्लावर रो ए पार्ट को कहती बेस टा को कहती रिसेप्टाकल और व्हाट थैलामस कोन ता कहती रिसेप्टाकल और थैलामस तापर देखिथिबो माने गोटे फ्लावर रो बेस रे एमती लीफी लाइक स्ट्रक्चर थिबो that is called sepal okay and group of sepal is called calyx that is called calyx आउ सेमती ए कलर पार्ट फुलर एमती कलरिंग अछि ना नै कलरिंग that are called petal and group of petal is called corolla हैला corolla बुझी परला ना नै यार काम कोन it attract the insect for the pollination कोन pollination सब कहबी बुझला तो आगे जति के हम पढिले सेति की देखिया बुझेली जति सेति की हमें एठी पढिला नुई जति की बुझेली सेटा को हमें देखिबा एठी हैला यस सुशांत दैट इज स्टामेन पिस्टिल एंड कार्पेल ना देखो स्टामेन हैला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहंती पिस्टिल और कार्पेल गोटिए जिंस दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओके तो देखो एबे सेउडा को पढुची flower in angiospermic plant contains a sex organ help in what sexual reproduction now male reproductive organ is called androsium na पढिलो तो सेउडा पार्टी रे रहि जाईची androsium and the individual part is called stamen सुशांत बुझी होची now yes or no लेखो तापरे female reproductive organ is called what gynosium individual is called carpel or pistil now the details about the stamen derived from a Latin word means thread माने सूता हैला consist anther and filament ए देखो मु तार इंडिविजुअल जदी स्ट्रक्चर नबा this is called anther कार stamen रो and this is called filament okay तापर आसो आंथर इज बाइलोब ए आंथर टा एई भलिया बाइलोब हेथाय बाइलोब एई भलिया हैला आंथर इज बाइलोब स्टेराइल टिश्यू बिटवीन द लोब्स कॉल्ड कनेक्टिव या भीतर या मझिरे एम्ति सब टिश्यू थाय दैट इज कॉल्ड स्टेराइल टिश्यू एंड दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव नाउ आंथर इज ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर व्हिच कंसिस्ट 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कॉल्ड पोलन देखो एठी हमरो आंथर इज ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर 1 2 3 4 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सेक ए देखो गोटे पोलन सेक दुईटा पोलन सेक तीनटा पोलन सेक चारिटा पोलन सेक बुझी परछ ना नै एंड दैट इज कॉल्ड पोलन सेक और माइक्रोस्पोरेंजिया जहां पोलन सेक सेया पोलन सेक सराउंडेड by 4 layer itself pollen sac ta surrounded by what 4 layer कोन epidermis endodermis middle layer and tapetum ए देखो लिखाई थिबो एटा tatum लिखाई जाईची that is tapetum हैला tapetum ताकू करिवो tapetum एटी लिखाई छी tapetum ए देखो internal layer टा को कहंती tapetum ता पाखु को अछि कोन middle layer एटा को middle layer कहंती आ ता भीतर को ता माने पछपट को अछि कोन एंडोमेट्रियम ए देखो एंडोडर्मिस आ पूरा बाहर को अछि कोन एपिडर्मिस आ एटी केटा पोलन सेक चारिटा पोलन सेक 1 2 3 4 एंड इट इज सराउंडेड बाय 4 लेयर कोन कोन पूरा एकदम जोटा पोलन सेक को लागि के अछि दैट इज कॉल्ड व्हाट टापेटम ता पछ को अछि मिडिल लेयर ता पछ को अछि एंडोडर्मिस और पूरा बाहर टा को कहती एपिडर्मिस हैला
बुझी पारलो फिगर रे भी देखै देली। अच्छा एबे आगु को जीवा। थैंक यू सुशांत। तापर आसो नेक्स्ट आउ तो के कि ओनली सुशांत इज राइटिंग समथिंग रेस्ट आर ओनली वाचिंग द वीडियो। हां तमे देखो जदी तुमको कोड बुझी न परछो पचारो। ओके नेक्स्ट देखो नाउ कम टू ओव्यूल। जेमती देखो हमर ओभारी रु ओव्यूम प्रोड्यूस होची आकर भी ओभारी अछि। हला एबे देखो आउटे आगु पढिया। नाउ tapetum consists nutritive tissue that nourish the developing pollen grain. pollen grain रो डेवलपमेंट pollen grain कोन कहि सब होई ना pollen grain हमर जो हमर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो स्टामेन रे जो pollen sac अछि सेही pollen sac भितर pollen grain थाए हैला। देखो pollen sac contains sporangenous cell that divide mitotically to form microspore mother cell and that divide to mutically to form four microspore la microspore and they stick each other called tetrad condition। ओके देखो हम तुम कहितली मियोसिस रे वर्तमान चारिटा डॉटर सेल होबो से चारिटा डॉटर सेल को एठी कोन कहला माइक्रोस्पोर कहला आ से माने निज निज भीतर पूरा अठा बले लाखी की थंती तो चारिटा सेल जेतेले पूरा लाखी की थिबो सेही जगह को सेही जिंसटा को कहंती टेट्राड कंडीशन। आफ्टर ड्राइंग दे सेपरेट टू ईच अदर टू फॉर्म पोलन ग्रेन हैला मुंडरे पसिला। ओके सुशांत फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट मु बुझेबी लेट मी फिनिश फास्ट। ओके ए चैप्टर टा आगे सरी जाओ बट टुडे ओनली आई विल टेल। ओके नो प्रॉब्लम बुझे देबे ना। देखो एना मु तुमको कहितले पोलन सेक भीतर पोलन ग्रेन था एबे कोन से पोलन ग्रेन केमिति हला देखिलो आउ थरे देखो पोलन सेक बर्तन एउडा हला पोलन सेक और माइक्रोस्पोरेंजिया। So pollen sac contains a type of cell that is called sporogenous cell। कौन कहली sporogenous cell। सही sporogenous cell divide है कि कौन होगा mitotically mitotically to form microspore mother cell not microspore mother cell जोटा कि हमरो काट प्रोड्यूस हुए ना तमरो sporangenous cell that contain pollen sac भितरे तो केते इंटरेस्टिंग अछि pollen sac भितरे कोन अछि sporangenous cell अछि सेही sporangenous cell माइटोटिकली डिवाइड हो माने माइटोटिकली डिवाइड केटा सेल दबो दीटा दबो माइटोटिकली डिवाइड हबो आउ कोन फॉर्मेशन करिवो ना माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्मेशन करिवो आउ सेही माइक्रोस्पोर मदर सेल अगेन डिवाइड बाय मियोटिकली तापर मियोटिकली डिवाइड हबो के ना माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड फॉर्म फोर नंबर ऑफ डॉटर सेल को कहती माइक्रोस्पोर और सही माइक्रोस्कोप गुडा एक दूसरे रो चिपकी है कि थांती और चारिटा सेल संग जो चिपकी है कि थांती दैट इज कॉल्ड टेट्राड कंडीशन। क्लियर हैला एबे आसो आफ्टर ड्राइंग दे सेपरेट टू ईच अदर एंड फॉर्म पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन केमती तयारी हैला समस्त बुझी परिथिबो। ओके नाउ and this process is called microsporogenesis। Formation of the pollen grain from pollen sac is called microsporogenesis। Clear है? Okay, this is all about your male reproductive organ। तो ए देखो हमरो एई भलिया वर्तमान तयारी हेकिरि अछि कोन ना पोलन ग्रेन अछि स्पर्म एना हेइनी बुझेला स्पर्म तयारी हबो स्पर्म एना हेइ नाही और दैट इज कॉल्ड गेमेटोफाइट। तो सब एना कहबी आसो एबे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जिबा ऑफ प्लांट। देखो एनिमल केस रे ओवारी रु डायरेक्ट हमर तयारी हुए कोन ओव्यूम बट हमर प्लांट रे ओवारी कंटेन्स ओव्यूल ए देखो ओवारी कंटेन्स ओव्यूल भीतर ही तमरो कोन तयारी हबो ना तमरो कोन
ओव्यूल प्रोडक्शन हबो केमिति देखो फर्स्ट हला ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लासेंटा ऑफ द ओवरी ओवरी रो प्लासेंटा जो एमती बेस पार्ट ता ताको प्लासेंटा कहंती दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एटा हला ओव्यूल रो स्ट्रक्चर हला तो देखो अब ओवरी बाय फ्यूनिकल ए देखो ए फ्यूनिकल एटी अछि ना फ्यूनिकल ए फ्यूनिकल द्वारा एमती अटैच हे कि थिबो कार ओवरी रो the attachment region of the ovule with the funicle is called our hilum तो एटी ना hilum ता थिबो हे देखो हमर वर्तमान एटी प्लासेंटा कार ओवरी रो एटा फ्यूनिकल आ ए स्ट्रक्चर ता कहंती हमर ओव्यूल ओव्यूल रो ए जो ए पार्ट ता कहंती hilum ovule is composed of thin walled parenchymatous cell पूरा cell अछि that is called parenchymatous cell हैला that is called nucellus बुझियला एटा आउथरे पढो ovule is composed of thin walled parenchymatous cell that is called nucellus एगुडा that are called what nucellus thin parenchymatous tissue थाए कहा भितरे ना ovule भितरे तापरे इनसाइड द nucellus मेगास्पोर मदर सेल सेठी जेमती माइक्रोस्पोर मदर सेल एटी सेमती मेगास्पोर मदर सेल इज प्रेजेंट इट डिवाइड म्यूटेटिकली एटी डायरेक्ट म्यूटेटिकली डिवाइड होची टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेठी 4 नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर थिला एटी 4 नंबर ऑफ व्हाट मेगास्पोर बट ऑल आर हैप्लॉइड माने क्रोमोसोम नंबर डिवाइड टू हाफ देन आउट ऑफ दिस 3 आर डिजेनरेट माने सेतु तीनटा पळेला डिजेनरेट हे गेला आ गोटिए बंचिला एंड वन बिकम फंक्शनल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस त सेठी केमदी फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलन सेक इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर ए जो हमरो मेगास्पोर फ्रॉम megaspore mother cell is called megasporogenesis clear after then कोन गइला ना functional megaspore divide into female gametophyte or embryo or female gametophyte or embryo sac ला ए टोटल टा गोटे embryo sac तयारी करिवो किए ना megaspore बुझियला देखो न लिखा है megaspore developed into female gametophyte or embryo sac the membranous nucleus divide mitotically to form 2 then 4 and finally 8 daughter nuclei embryo sac भीतर जो न्यूक्लियस ता अछि सेटा माइटोटिकली डिवाइड हे कि 3 टाइम्स केते होची ना 8 टा न्यूक्लियस रे 8 टा न्यूक्लियाई रे कन्वर्ट होबो आउट ऑफ दिस 4 न्यूक्लियाई रिमेन एट द माइक्रोपोलर एंड एट देखो एटा हला तमरो माइक्रोपोलर एंड केटा अछि ना 4 nuclei remain at the micropolar end and other 4 chalazal end और बाकी चारिटा chalazal end को पड़े जाए then one nucleus from each group ए देखो 8टा nucleus है कि कार embryo sac भीतर 8टा nucleus हला चारिटा हमरो एटा को कोनती chalazal end ए पार्ट लेयर chalazal end को पड़ेला चारिटा और चारिटा nucleus पड़े आसला माइक्रोपाइल आडकु किंतु तापर कोन होय ना गोटे nucleus from the micropylar end आउ गोटे न्यूक्लियस फ्रॉम द chalazal end enter into the center and form a layer सेउडाटी लिखा है देखो one of the nucleus from each group migrate to the center to form what polar nuclei आउ ए polar nuclei रे माने केटा न्यूक्लियस अछि एमटी दीटा न्यूक्लियस अछि ओके remaining 3 nuclei at the chalazal end called antipodial cell chalazal end पाखरे जे बाकी जो तीनटा न्यूक्लियस रहला that are called antipodial cell and the 3 cell at the micropylar end and divide to form 2 part the 2 cells are called synergids and another is called egg ना बुझी पारलोनी देखो बाकी जो तीनटा सेल एपटे तीनटा तो chalazal end रो जो तीनटा सेल ताको antipodial cell कहंती आ एटी माइक्रोपोलर एंड रो से जो तीनटा सेल अछंती सेथुर दीटा को कहंती साइनर्जिड आ गोटा को कहंती ओव्यूम हैला और एग सेल द टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म ए डेफिनाइट न्यूक्लियस एटी दीटा जाको फ्यूज हे कि ताको कोन कहला डेफिनाइट न्यूक्लियस हैला
नेक्स्ट आस जीवा एबे आस से जो पोलिनेशन देखो हमर हायर एनिमल्स माने रिप्रोडक्शन करि पारंती ठीक रे काहे कि सेमानकर बॉडी मूवमेंट होची किंतु गोटे हायर प्लांट बॉडी मूवमेंट होची कि होउनी तो सेमाने रिप्रोडक्शन तो करि हबनी तो सेति पय तांकर फर्टिलाइजेशन पय से एक्सटर्नल एजेंट को चूज करंती से एक्सटर्नल एजेंट किए ना विंड हेई पारे वाटर हेई पारे इंसेक्ट हेई पारे अदर एनिमल हेई पारे आ सेही प्रोसेस माने जो थरे कि हमरो तांकर रिप्रोडक्शन हुए दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन देखो एटाला तमरो स्टामेन एंड this is called pistil and this is called our stamen तो ए स्टामेन रे वर्तमान हमरो पोलन ग्रेन तयारी ही जाई छी हैला आ वर्तमान एटा this part is called ovary this is called stigma and this is called style हैला एटाला स्टाइल स्टिग्मा आ एटाला ओवरी आ ए ओवरी भीतर तमरो कोन अछि ना ओव्यूल अछि आ ओव्यूल रे वर्तमान कोन ओव्यूल प्रोडक्शन हेकि अछि तो एई पोलन ग्रेन टा आसी कि वर्तमान आको एटी फर्टिलाइज करिवो तो प्लांट रे तो निजे निजे हेइ परिबन बिकॉज़ दे आर नॉट मूवेबल तो से एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर कला से एक्सटर्नल एजेंट वर्तमान गोटे इंसेक्ट आपरे बसिला आसी आ तार बॉडी रे एई पोलन ग्रेन लागी गला अगेन व्हेन इट एंटर इनटू द व्हाट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और कार्पेल तापरे एई पोलन ग्रेन गुडा एठी लागी गला आ एई ओव्यूल रे पसिला से पोलन ग्रेन आ फर्टिलाइजेशन करिकि सीड तयारी कला हैला तो एई जो एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर कला एबे गोटे इंसेक्ट काहे केते काम करियो ताकू फायदा अछि कोन अछि ना हमर एई स्टामेन गुडा करे सब नेक्टर थाए से नेक्टर खाया को से सेठी बसिला बेले तार पोलन ग्रेन गुडा एठी अटैच हो जाए तापर सेई जेतले सेई इंसेक्ट एठी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रे बसे सेई पोलन ग्रेन गुडा एठी रिलीज हो जाए एठी से आसी काई बसे तार फायदा कोन ना एठी भी नेक्टर अछि हैला से नेक्टर खाइबा आसारे एठी कि से आसे क्लियर हैला ओके तापर आसो सेई जो ट्रांसफरेंस ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पोलिनेशन सेई लिखा है जेठी पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू stigma of the ovary same flower or in the same flower or different flower same flower भी करिवो different flower भी करिवो it is two type कोन self pollination and another एला cross pollination तो self pollination माने ला गोटिए गछर गोटिए फूल रे निज निज भीतर फर्टिलाइजेशन हेई गला और pollination हेई गला जेमति देखो transfer of the pollen grain from the anther to the stigma of the same flower or different flower is called what self pollination एटी लिखा है ना सेम फ्लावर गोटे फ्लावर माने तमने से फ्लावर टा बाइसेक्सुअल हेतिबो और डिफरेंट फ्लावर किंतु प्लांट गोटे हेतिबो गोटे प्लांट रे भी यूनिसेलुलर प्लांट माने गोटे मेल फ्लावर आ गोटे फीमेल फ्लावर गोटे प्लांट रे भी होंती तापर गोटे नोट देखो ऑटोगामी ट्रांसफर ऑफ द पोलन टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर दैट इज कॉल्ड ऑटोगामी आंसर है फिसम सतिबम मटर गछ then जेटोनोगामी कोन ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट गोटे प्लांट रे डिफरेंट फ्लावर गोटे मेल फ्लावर थिबो और गोटे फीमेल सेठी जो ट्रांसफरेंस हमर पोलिनेशन होची एग्जांपल हैला मैज नाउ कम टू क्रॉस पोलिनेशन कोन ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट जेंति बॉम्बाक्स हैला गोटे गछर ना तापरे से जो पोलिनेशन टा डिफरेंट एजेंट द्वारा होची से पोलिनेशन को कोन कहंदी बहुत इंपोर्टेंट एंटोमोलॉजी ऑलरेडी एंटोमोफाइली तम एग्जाम रे ऑलरेडी पढी सारिलानी एंटोमोफाइली माने पोलिनेशन बाय विंड देन हाइड्रोफाइली पोलिनेशन बाय वाटर जूफाइली पोलिनेशन बाय एनिमल एंटोमोफाइली पोलिनेशन बाय इंसेक्ट तापरे बाय द एंड दैट इज मिर्मेकोलॉजी एंड द्वारा पिंपुड़ी द्वारा यदि पोलिनेशन होची दैट इज कॉल्ड मिर्मेकोलॉजी देन चाइरोटेरोफाइली बाय द बैट्स बादुड़ी द्वारा हैला तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिप्रोडक्शन तापरे आसो फर्टिलाइजेशन केमती होची देखो
सेटा हमें पढ़िले एनिमल फर्टिलाइजेशन एबे प्लांट फर्टिलाइजेशन देखो पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द पोलन ट्यूब एडी जतले पोलन ट्यूब टा देखो बर्तन एंटी करी देखुची बर्तन एटा होची हमर पिस्टिल और व्हाट पिस्टिल और कार्पेल पिस्टिल और कार्पेल है नहीं तो एडी बर्तन पोलन ग्रेन आडस पडिला एई पोलन ग्रेन टा बर्तन कोन हबो ना गोटे ट्यूब तयारी करिवो एई भलिया एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड पोलन ट्यूब ए पोलन ट्यूब रे दी प्रकार सेल थाए गोटे वेजिटेटिव सेल थाए आ गोटे हला तमरो वेजिटेटिव सेल disintegrate male gamete reaches to ovule fertilize egg हला गोटे हला वेजिटेटिव सेल ए पोलन ग्रेन रे दी प्रकार सेल गोटे वेजिटेटिव सेल आ गोटे हला जेनरेटिव सेल हला तो ए वेजिटेटिव सेल टा डिसइंटीग्रेट हे थाए आउ से जेनरेटिव सेल टा डिवाइड हे कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करे आ से मेल गैमेट टा जाय कि तमरो ओव्यूल भीतर पसी कि तमरो ओभारी रे जो एम्ब्रियो अछि ताकू फर्टिलाइज करके सीड दिए हला तो ए जे दीटा सेल अछि जेनरेटिव सेल दीटा अछि गोटे जेनरेटिव सेल एम्ब्रियो तयारी कला another fertilize another gamete जोटा ए जेनरेटिव सेल टा दीटा मेल गैमेट होती ना तो गोटे मेल गैमेट रीचेस टू फर्टिलाइज another fertilize टू पोलर न्यूक्लियस टू फॉर्म एंडोस्पर्म ए एंडोस्पर्म टा तयारी करे आउ सही पोलर न्यूक्लियस रे दीटा न्यूक्लियस अछि आ गोटे न्यूक्लियस गला तीनटा तो दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन ओके तो आउ फर्टिलाइजेशन भी दी थरा हला दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन नाउ synergids and antipodial cell disintegrate हला एम्ब्रियो एडा सब डिसइंटीग्रेट हे गला हला नाउ कम टू आउ सेटा एम्ब्रियो तयारी हला से एम्ब्रियो टा फर्दर स्टेज रे कोन कन्वर्ट हे जिवो ना सीड रे कन्वर्ट हे जिवो देन इंटरगुमेंट इंटरगुमेंट जोटा थला ओव्यूल रो that is converted into testa and tegmen that is nothing but a covering of this seed which are covering of this seed then nucellus disintegrate in some cases it persists called perisperm example the beet and black pepper and beet तो nucellus एमिति डिजेनरेट हे जाय हला डिसइंटीग्रेट हे जाय किंतु किछटा केस रे एम्ब्रियो थांती कोथरे ना बीट ब्लैक पेपर एंड बीट रे ओके एबे आसो नेक्स्ट जिबा तो दिस इज आवर कोन ना सीड कन्वर्जन हे गेला तो ए सीड टा का भीतर थाए ना ओव्यूल भीतर आ सेही ओव्यूल टा देखो एमती वर्तमान मुडा कहि दउची हमरो ये फॉर्मेशन फ्रूट फॉर्मेशन कहि दउची आ सुशांत में पचार थिला ना हां सुशांत एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सरी गला यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ओके देखो एना बते भी तुम मन को फ्रूट विषय जेटा सुशांत रो डाउट थिला ए देखो एटा हला तमरो स्टिग्मा एटा हला तमरो कोन कार्पेल और पिस्टिल हला तो वर्तमान एटा हला स्टिग्मा एटा स्टाइल एटा हला ओभारी भीतर वर्तमान ओव्यूल अछि माने माने कर केमति माने नै कि गोटी ओव्यूल थिबो बहुत सारा ओव्यूल भी थाई पारे एते ओव्यूल अछि तो ये ओव्यूल रो फर्टिलाइजेशन नै कि एठी सीड हला एठी सीड हला एठी सीड हला तो वर्तमान केटा सीड हला तीनटा सीड हला तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एडा सब सुखी की झड़ी जाए केवल एई पार्टटा ओभारी पार्टटा एमती फुली जाए आ फुली की कोथरे तयारी हबो ना तमरो फ्रूट रे तयारी हबो सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द fruit is nothing but mature ovary that may or may not be contain the seed तो वर्तमान एई जो फ्रूट रे केटा सीड थिबो तीनटा सीड थिबो जति गोटी ओव्यूल थिबो ताले गोटी ही सीड हबो हैला तो दिस इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट तो मने रखो हमर फ्रूट जो हम वेजिटेबल खाउछन ब्रिंजल हैला कुकुम्बर हैला तमरो कैप्सिकम हैला ग्रीन चिली हैला टमाटो हैला लेडीज फिंगर हैला बुझेला दी पिसम हैला जो मटर that all are fruits anything that contains seed is called fruit तो don't think कि तमरो बाइगणटा तो परिवार जाउची सब्जी रे जाउची वेजिटेबल रे जाउची सेटा फ्रूट केमति हे गेला हैला कारण ब्रिंजल contains seed हैला उंडरे पसिला तो दिस इज द फ्रूट फॉर्मेशन
एबे सुशांत पचारथिले ट्रू फ्रूट किए फॉल्स फ्रूट किए तो दैट फ्रूट दैट कंटेन्स दैट इज नथिंग बट द मैच्योर ओवरी जोटा ओवरीटा मैच्योर है कि फ्रूट तयारी करथिबो दैट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट कोन जोटा मैच्योर ओवरी नुहे जेमति हमरो गोटे एग्जांपल देले त माने ना बुझी परिबो देखो एटा मने करो गोटे कट एप्पल तो कट एप्पल रे एमती देखिथिबो एबेला मझी रे थाए तार आ सेठी सीड थाए तो देखो एबे गोटे खंडा क्लियर करौची सपोज एटा हला तमरो मैंगो हला मैंगो रो टाकुआटा कोठी थाए एठी थाए एंड दिस इज फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी तो फ्रूट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट एपिकार्प हला आ एई पार्ट कहंती मेजोकार्प आ इंटरनल पार्ट कहंती कोन एंडोकार्प आ तमरे एंडोकार्प भीतर ही मंजी थाए हला तो देखो एबे ड्राई फ्रूट्स रे कोन मेजोकार्प न थाए मैंगो रो मेजोकार्प जो पपीटा में खाउचे दैट इज मेजोकार्प खाउचे हला तो वर्तमान ए फ्रूट कंटेन 3 लेयर एपिकार्प मेजोकार्प एंड एंडोकार्प कंटेन सीड तो वर्तमान देखिलो एटा वर्तमान एमती जो अछि या भीतर सीड अछि त माने सीड टा एंडोकार्प रे अछि तापरे मेजोकार्प अछि तापरे एटा हला एपिकार्प एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्रूट तो फ्रूट जदी एटा हम एटा काटी पकड़ देउछु ताले हम खाउछु कोन ना एप्पल रो हम थालामस खाउछु थालामस हला जो रिसेप्टाकल फ्रूट फ्लावर रो बेस पार्ट ता तो सेति पई एप्पल इज ए नथिंग बट ए फॉल्स फ्रूट एटा गोटे फॉल्स फ्रूट मुंडर पसिला सुशांत पचारुथिलो फॉल्स फ्रूट कोन ट्रू फ्रूट कोन क्लियर आई थिंक बुझी पारिथिबो एग्जांपल एप्पल आउ भी अछि पियर तो दीज आर फॉल्स फ्रूट ओके तापरे गोटे बढ़िया इंटरेस्टिंग जिंस बते की क्लास एंड करिया देखो हमरो सेमती एटा कोकोनट रो कोन हुए ना कोकोनट रो दी तीनटा लेयर गोटे हला एपिकार्प गोटे मेजोकार्प गोटे हमरो एंडोकार्प तो देखो एटा वर्तमान एपिकार्प जोटा कि आउटर कवरिंग ताकू लागि कि अछि मेजोकार्प no see Susan banana is a true fruit but it does not contain seed that seeds are sessile seed hela but banana is a fruit mane rakho true fruit तो एटा हला मेजोकार्प तो जो हस्क माने जो नडिया रो कत्ता जोटा थाए से नडिया रो कत्ताटा को पार्ट नडियाटा गोटे फ्रूट और नडिया रो जो मझीटा दैट इज कॉल्ड मेजोकार्प टा होची तारो ह्यूज हस्क जो नडिया कत्ताटा होची मेजोकार्प ताकू लागि कोन थाए एंडोकार्प आ एंडोकार्प भीतर सीड अछि तो एठी किना सीड टा थाए नडिया रो तो नडिया रो जो पानीटा कोन दैट इज नथिंग बट एंडोस्पर्म एटा बहुत थोर एग्जाम रे पडिलानी एंडोस्पर्म और जो तुम नडियाटा खाउचो जो नडियाटा व्हाइट कलर रो दैट इज नथिंग बट एंडोस्पर्म से एंडोस्पर्म आगे लिक्विड थाए तापर सॉलिड रे कन्वर्ट हो जाए डोंट थिंक कि कोकोनट रो से जो धलाटा को सीड कहंती ना सीड गोटे नडिया पुराना कालिया नडिया को बाडैबो देखो गोटे छोटियाटे बाहरिबो धला दैट इज द सीड आ एटा मोनोकोटिलीडर माने नडिया गछ पतिले गोटिए ही पत्र आगे बाहरिबो हैला तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रूट हैला आमर सुनो बानाना टा हला फ्रूट बट इट इज ए सीडो फ्रूट